Good evening, everyone. Hi, good Good evening. evening. Hi, ma'am. Good evening. Hello. Am I audible? Okay. Yes. Oh, okay. Let's continue with our ad that we were doing yesterday. Please open ads.google.com.
Okay. Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes. One second, huh? Just one second. Yeah. So here we have two ways to understand the drafts. Okay. First thing is that you all will see the draft on the first page itself. Okay. And whatever campaigns you all have over here, you'll see the draft campaigns right here. Okay. In case if you all don't see, you all will definitely see it over here. In case if you all don't see it over here, the second place is in the campaigns part over here. Okay, this is where you will see your either drafts over here or probably the ones which are paused. Okay, so I want you guys to open the one that we were doing yesterday. I hope you all remember the date and everything. Open with the same one and let's go ahead. Do you all find your campaign? Yes, ma'am. Okay, all right. I'll quickly find mine because I'm unable to find mine. So just one second. Okay. So what we did till, I think, keyword generation, and we did it till the budget part over here. We'll skip this. We finished till budget and the headlines and everything over here, right? Now over here we have what we have to understand is the extensions that we were supposed to do. So I'm just gonna share my extensions part.
All right. We have 10 different types of extensions. Okay. And those extensions are different site links, call extensions, call out extension, etc. Now, first of all, why are we using the extensions? We could have gone for a normal Google ad with the copy, headlines, description, and just as it is, we can publish that. Extensions are not compulsory. But with extensions, your quality score or the ad score will increase. Plus, with extensions, you all can make sure that you all are getting 25% more clicks than the normal clicks. Okay. So I'm gonna give you an example over here in the search by first need to see if we will find any like that. Just 1 second. I'm gonna write down digital marketing agency Mumbai. Okay. So if you see over here, we have the headline, we have the descriptions over here. Okay. Now, if I have an arrow over here, can you see this? When I have an arrow, it is clickable. These are site link extensions. Okay. What happens is that if these were not available, let's say in this ad, okay, if it was just this much, I may not have clicked. But when I read 210 million plus contacts, pricing plans, better B2B prospecting, XYZ, right? I kind of get an urge to click on this, any of these things, because I'm getting more options to click on. Okay. So if you have more than one final URL, let's say this is my one of the final URLs that I have. If I have more than one final URL, I may have multiple URLs to click, then the person has got more options to click on. That is site link. Okay. If you see this, even these are site links. See, right? Look at this. All of these things, all of these site links. Okay. So like this, we have different types of extensions, out of which one is the site link extension, which is the most important extension. We always have site links in each and every ad. And in fact, we are to use almost 4 to 6 site links. Normally, we use 4 to 6 site links. Then we have call extensions. Call extensions are when we have our toll-free number or some sort of mobile number or any sort of number available displayed on the ad. You must have seen such ads where there are numbers displayed. You click on it. If you are doing it with the phone, if you click on it, you can directly call on the number. Or if it's on the laptop, you may have to use that number on your phone and then call on that number. But the calls are happening, and that is also known as call extensions. Okay, any number displayed on the ad. These are the additional features we have on over and above the ad, in the ad. Okay. Then we have call out extension and structured snippet extensions. These are almost the same, so I'm going to explain it together, but there's a thin line difference over here. Call out extensions are those extensions where we give additional services, right? Let's say when Myntra makes an ad, Myntra says 14 days hassle-free delivery, 14 days free shipping, whatever XYZ, then customer care 24 into 7. All of these are additional services which are free of cost, right? That is call out extensions. Any additional services which are really, really good and you cannot resist having those services. Those are your caller extensions. Structured snippet, on the other hand, are credentials. Any credentials your use of anything, that is structured snippet. For example, if a developer or a builder says, mm, we use Jaguar taps. Okay. That's a credential. Jaguar, it's a brand. It's a credential they're using. A garage guy who owns a garage says that we use only Michelin tires. That's again a Seat tire. That's again a uh, credential, right? A fashion designer, someone who's a local fashion designer, boutique, okay? And they advertise in a way saying that Sabyasachi replicas or Manish Malhotra replicas. You are using credentials of someone and having an ad done,
right? Let's say I have Digital Vidya has got a course which is very, very popular, very famous, and Digital Vidya says that, oh, we have this course. Now they are talking about a course in their particular ad, which is a credential. So anything that steals credentials of someone or something is known as structured snippet. Okay. Then we have location extension, Google My Business. We showcase our address on the ad where people can understand, okay, that this it's in the vicinity, the places in the vicinity they can visit anytime they want. Text message extension, anyone can text you on any WhatsApp number or any business number or a text message or probably like an Instagram message or somewhere, anywhere where they can DM is a text message. Okay. Lead extension, a person who can fill up a form. If you'll remember on Instagram and Meta, we have signups coming up, right? So what are those signups? Signups are nothing but just normal forms where they have to fill up like name, email ID, number, and everything. And the same we have in Google as well, just the same as on Instagram. Then we have promotion extension where we use coupons and we use that, like, they can, like, I've seen a lot of like Shein types of website using such coupons, like use ABC 123 coupon for 50% off or 25% off. They display the coupons directly, the promotions directly, 50% off, 20% off, all of those things. Price extension. If you have a very, very competitive price, you can use a price extension. For example, Flipkart used this extension. I think lately they had this 1 rupee thing going on that they sell certain things for one rupee, and that was pretty less competitive price. So they used to do that extension. And then application extensions was basically when you want people to download the application for you. So we have 10 different extensions over here. These extensions are only used when you feel like, first of all, we always recommend to use extensions. You don't really have to use all of them. Use whatever you want, whatever you feel like is the best for your ad. You can use those extensions. All right. I will suggest not to use all of them. Second, these are used, of course, you can go for the normal ad also, even that can be published. But with the extensions, you all get a lot of good quality score in your ad. Plus, you get a lot of clicks. Okay. CTR, the click-through rate increases through extensions. That is why we use extensions. Okay. Plus, whenever you all have SCRPs, and whenever you all are live, okay, with a campaign, does not really mean that every time all the extensions will show up. The extensions will only show up when AI feels there is a need of showing up that extension. That's when it'll come up. Otherwise, the ad will come as it is, just the headlines and descriptions, nothing else. Okay, Aman? So, ma'am, the context of extension is it will be placed all the time at the end of the campaign, like a sponsored ad, or it will be there are different things like app extension and text message extension. So these are placed somewhere else, or they will be available only in the end of the campaign sponsored And ad. after description, you will see all the extensions coming up. Okay, so whichever type they will be called as extension. Yeah, Okay, thank you. no problem. Guys, are we clear with the extensions, everyone? 10 extensions? All of us? Okay. So for the campaign that you all were trying to run yesterday, I want you guys to decide, first of all, which extensions you all want to do. Okay, for that particular campaign. Decide the extension. Think which one you all want to go for. And of course, you all have to discuss it with me first. Okay. And tell me why have you chosen certain extensions that you all will choose. You all also need a reason to choose certain extensions. You all cannot just randomly say that I want to use extensions. Extensions are only used when you are in certain need of that extensions. And it is always needed. So which extensions are you using? That is very important to understand. Okay. I'm only one we have to choose, right? One or two. As I said, there is no particular number. You can use 10, you can use one or two, you can use as many as you want as per your requirement only. Yes, Apsita? Ma'am, I'm just confused here. You just said
Okay, the extension we will add, the AI will decide whether it will show it or not. Is हम्म it like that? Even though if we'll add the some two three extensions there, हम डाल the देंगे ad will पर be there. एआई The डिसाइड करेगा description of दिखाना है कि नहीं acha. दिखाना है. Why? Okay, fine. ठीक है. I want you guys to decide which one are we going for in your particular campaign. So site link is a must, Charming. Hmm. Um, I plan to use it for various products. So it takes on that particular product page. So Yeah. I think I have six, right? Yeah. So I can directly take to the product. Call extension, definitely yes. We can give the number to support. Uh, Location, no, doesn't make much. Lead extension, that's another one to get customer data. Hmm. Basically like a sign up. And this additional service. So my question is, can this additional service be like a free service? Yeah, uh, oh, I mean, if Myntra gives additional services like free pickup and drop or like, free return or whatever, I think all of those are free services only, no additional. So my view is like we provide styling service free with some products. So I can use If it you're there. doing it already, then yes. If you're doing With it some already, product we then do that. So you can put it there. for those products only, then you can put it. Yeah, that's But right. you have to be So very yeah, specific about that, that if you're using I it for think the with product. five or six I can use definitely. Others, Hmm. Yeah, for my brand, like I have a racket's own brand, which deals with tennis rackets and other rackets. So I can also have color citing extension where I can write shop tennis racket or string services on the citing extension. Then I can have a call out extension as well, where I can say free shipping or free stringing on the first order kind of thing. hmm, And then I can have a call extension where I can give my number so they can contact me immediately. yeah, And location, yeah, and then location and other extension as well I can use where I can tell that where we are located. So if they want to come offline, they can come and visit my store. okay, works. Others, I'll go for message extension, lead extension, and price extension. what's your business? Basically, this time I'm taking another business that is they're giving services of digital marketing and SEO and everything. So it's a It service provider kind of. works. Ma'am, I'm going to use site extension, call extension, uh, this call out extension for additional services, and lead extension. ठीक. Done. Ma'am, I am going to use Siteline extensions for my blogs, travel blogs, where they can read that blogs and lead Hmm. form extensions to increase my newsletter growth pace. Hmm. Fine. Explain number six once again. Text message extension. Anyone who can, if you give them a button for texting someone, they can directly text you on your WhatsApp or Instagram, wherever you want. Any Oh, message okay. destination. Ipsita? Ma'am, here the this and the location extension, which is the GBM you have written. But GBM is the separate one, ना ma'am. वो ऊपर आता है, वो Google Google My My Business Business, का अलग से आता है. Google My Business is a Google product. It can be connected to Google Ads. Any Google product can be connected to any Google product easily. No, that you have written. This is an extension, no ma'am. We are putting the address, so that it's considered as the GBM. What is GBM? And what is, first of all, it's GMB. What is GMB, Ipsita? Oh, sorry, Google My Business. हाँ, क्या होता है वो?
in ACRP पे Google My Business पे our location used to come, the Google Map and हाँ, the तो little हम वही description. करेंगे, हम एड्रेस ही डाल रहे हैं हमारे ऐड पे, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड वेयर वी आर एग्जैक्टली, और ये दैट इज मोस्टली यूज इन द विसिनिटी एड्स. अच्छा, okay. Okay. So this is same, right? Okay. Now I'm gonna show you guys once all of the extensions and how to make those extensions. फिर आप अपने हिसाब से आपके जितने भी आपने सिलेक्ट करे थे सारे एक्सटेंशन आप बना देना. ठीक है. I'm gonna start with site link first of all. प्लस साइन पे क्लिक करो. Site link text. Always remember what you're reading, okay? Final URL of that site link will come over here. The text will come over here. Okay. So let's say, for example, digital corporate training. Okay, now I'll open the website because I was working on Digital Vidya. Corporate trainings. There we go. और ये आ गया हमारा final URL. Go back to your search. Give your final URL over here. Description. Something from the page only I'm writing right now. Later you all can write down your own descriptions. Okay. This is my one site link. Like this, I can make multiple site links with different URLs. Your main homepage URL is different, and the other URLs of the website are different. Okay. Now, like this, you can open site link 2 and you can make those. You can site link 3, you can make, and site link 4, and then you can click on create. Once all the 4 are, or 6 are done, you can just click on create. Like this, you will see almost all of your site links right here. Okay. Look. Will I be able to add an image to each site link later on? No. No. There are no images over here. There's only one image that you can add to your search ad. Callouts. Now, callouts, as I said, it is when it is more of your extra additional services that you all give, right? So I've already written a lot of callouts over here. I'm just gonna take all of those and apply. Okay. Then you go on more asset types, promotions. If you want to go for promotions, just click on the plus sign. I've already made one promotion over here. It looks like this, and apply. Okay. Even here, I'll just show it to you once. New promotion. Is there any occasion? If the occasion is not there, you can go for the none. If there is an occasion, you can go for the occasion. Let's say Diwali. And this is INR. Monetary discount, percent discount. I want like to give 20% off on the item, which is digital marketing course. DDMM. And then the final URL of that course link. Okay. So let's say my course. I'm gonna give this link. No. Any date that we have? No. So save it. It's ongoing. So let it go. Okay. And apply. Can I see Pricing. the promotion type once again?
You want me to make the other one? One more? I just want to see the promotion type options. Just 1 second. Occasions, language, which language you're going for? 20% I've given the person discount over here. Yeah, I just Up want to see to, this. okay. Just stay there, just for a. So we have this four, right? Yeah. Up to Monetary, percentage, up to monetary, up to percentage. Hmm. Okay. Okay. And then cancel because it's already done. Then I can have price extension over here. If you have a very competitive price, you can go for the price. I'm gonna just give this. What are we going for? Services. INR. Mm, you give a description over here of why it is 50,000 crores or whatever, XYZ. Mm, the final URL. If you have a mobile URL, then okay. And then apply. Okay. So you can make one of this and then it looks like this and then you can apply. Okay. This is the price to your campaign. So if you have a very competitive price, you can always show the price over there. Only if you have a competitive price, then only, otherwise you do not use this particular extension. Okay. Then we have call extension. Yes, Aman. Ma'am, out of these extensions which we are showing, there are few particular extensions I've seen and few never seen. So Yeah, not are all of them are being used everywhere. okay. So which ones are the best practices? Site links, always used almost by everyone. Okay. Site links, call extension, structured snippet, call out extension. Uh, I would say form extension को छोड़ के सारे ही यूज होते हैं. Okay. ठीक है. स्ट्रक्चर के फॉर्म एक्सटेंशन यहाँ पे इतना यूज नहीं होता है. इंडिया में यूज नहीं होता है बिल्कुल. इनफैक्ट इंडिया और के बाहर भी इतना ज्यादा यूज नहीं होता है. ये वाला जो भी आपने लास्ट में शो किया था प्राइस वाला, ये भी कभी नहीं देखा। नहीं होते, प्राइस वाले तो होते हैं. ओके। मैंने फ्लिपकार्ट का ही देखा था करते. फ्लिपकार्ट का फिर एक आई थिंक देर वॉज वन स्टोर विच वॉज अ न्यूली ओपन, आई थिंक ब्लिंकिट when it was new, or which something when it was pretty new they did it as well. I remember. So they ओके। do it, but not, say, as I said, price extension is only if you have a very good price, then हाँ only you जी। do it. Otherwise, you don't do it. So it is और very मैम rare to for people to use it, but yeah, people still use it. I've seen it. Huh. What I've not seen till now is lead form. I haven't ओके। seen it myself. Not even in India, not even outside India. ओके। और ये डिवाइस डिपेंडेंट होता है कि मोबाइल के ऊपर कुछ और दिखेगा और लैपटॉप पे कुछ और दिखेगा, हाँ, थोड़ा या? बहुत अलग आता है ना उसमें. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल साइड लिंक ही ले लो. मोबाइल पे सिर्फ 4 ही साइड लिंक दिखते हैं. अगर 6 भी डाले होंगे तो भी 4 ही दिखेंगे आपको. और अगर आप लैपटॉप से करो तो 6 दिखते हैं. वैसा. ओके, तो हमें डिवाइस डिपेंडेंट होकर नहीं सोचना है जब क्रिएट कर रहे होंगे, नहीं. लेकिन उसका लेआउटिंग डिफरेंट हो सकता है एंड में। हाँ. ओके जी। थैंक यू। ठीक है. स्ट्रक्चर स्निपेट में I'll click on this. Now I've already created a lot of them, but I'm just gonna, now whatever, let's say I have courses over here.
Mm, mm, advance. ठीक है, सेव। एप्लीकेशन में अगर आपके पास एप्लीकेशन है तो प्लीज डाल दो, जो भी एंड्रॉइड आईओएस जो भी आपके पास एप्लीकेशन है वो डाल दो। लेट्स से नाइका, इट कम्स आउट लाइक दिस, सी, एंड सेव इट। इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाता है, ये अमेजोन बहुत यूज करता है इंस्टॉल वाला ऑप्शन, ऐसा वाला। न्यू लीड फॉर्म। हम्म, I'm just writing right on master class, but you can write a good description as you want. Now, what do you require? I require name, email ID, phone number, probably country, okay, and my privacy policy, URL. If you want to add any background image, you can add from here. Mhm. Thank you. Our counselor will contact you soon, and visit site and call to action URL, site URL. So my homepage URL over here. All right. Comes out like this, and then you save it. Oh, privacy policy, just 1 second. Mm, okay, I'm unable to find a privacy policy link. I think they've changed it somewhere. So I'm just going to write down the homepage link for now. But normally all the websites will have a privacy policy for sure. And apply. Okay. So like this, I've given all my extensions, and after giving all the extensions, go on save. Whatever you have done, good for you, good everything, all of those. Go on next, and then give the average daily budget. Next.
Then after checking for errors, you'll get all and one option for publish. When you get the option of publish, go ahead and publish it. You may not get the option for publish if you have not given certain things. Like for example, in my case, I have not given proper keywords. That is why I'm not getting those that option. Okay. And you will also come across this confirm it's you, because since you're making an ad, Gmail will make sure that it's you have to confirm it for yourself. So I will now confirm with my phone that it's me. I keep getting this, every Yeah, now it's and very then. normal of Gmail to do that. Yeah, I will keep on going to YouTube and put that characters. Yeah, Yeah, yeah. same thing. Yeah, it's pretty irritating. You working for a couple of hours, it keeps popping up. Yeah. It is for security reason, double authentication. For now, I don't have the keywords list, so I'm just gonna use the AI for that. You all can put your own keywords list as you all have given already and put it down. Are we going to look at AI Max as well after doing this manually? AI Max is nothing, just give a link and the AI does all the work for you, which It again did will make some, you lose a lot of money as well. we did some good stuff on the images. It's like it brought in the live images from the website. Ah, that and all of this is okay, but if keywords, if you expect them, keywords if given by AI, then it's not good. Yeah, I know that. I agree. Yeah, we can always override that, right? When it gives Yeah, you yeah. the. You all can do your extensions, please. Ma'am, we have to choose at least 4 or 6 site link texts. 4 for now. Okay. Man, just wanted to ask one thing from yesterday's class. Hmm. Uh, in the audience segments, there were three things: demographic, interest, and behavior. Hmm. तो उसके अंदर हाउ विल आई डिसाइड कि जो मेरी ऑडियंस है उसके लिए क्या बेटर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर होना चाहिए? जैसे अभी कोई खाने का रहा, जोमैटो हो गया या फिर लेट्स से मिंत्रा हो गया, दे सर्व एंड cater टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस, ऑल द एज ग्रुप्स, ऑल द लोकेशंस एंड एवरीथिंग, ऑल द राइट. इनकम, राइट? तो वहां पे हम डेमोग्राफिक्स नहीं डालते हैं, ओके. वहां पे हम इंटरेस्ट डालते हैं और बिहेवियर डालते हैं। पर जहाँ पे पता है कि यार ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जो स्पेसिफिकली एक एज ग्रुप के लिए है या एक जेंडर के लिए है, तो हम्म. वहां पे हम डेमोग्राफिक्स डाल देते हैं। ओके, तो अभी मैंने उस ऑप्शन पे क्लिक किया था, इंटरेस्ट और बिहेवियर या डेमोग्राफिक्स। तो फर्स्ट कॉलम तो एम्प्टी है। सेकंड के अंदर जब गया तो वहां पर सर्च करा डेमोग्राफिक्स के अंदर एज वगैरह वगैरह चीजें आ रही थी। हम्म।
तो सिलेक्ट कहाँ पर करना है? वही ऑडियंस सेगमेंट्स के अंदर ही सिलेक्ट करना है, सर्च में आपको लिखना है वॉट एवर यू वांट टू सिलेक्ट। और अगर तो सर्च में समझ में नहीं आया तो ब्राउज कर लो, सीधा ब्राउज में जो भी ऑप्शन आ रहा है, इफ यू फील लाइक दैट्स गुड इनफ फॉर यू, गो फॉर इट। अच्छा, लेकिन ब्राउज में जैसे फॉर एग्जांपल डेमोग्राफिक लिखा, तो डेमोग्राफिक के अंदर मैंने कंट्री सिलेक्ट कर दिया, कंट्री या रीजन। हम्म। इंटरेस्ट के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इंटरेस्ट के अंदर और बिहेवियर के अंदर क्या व्हाट्स योर प्रोडक्ट और यूआई कैटेगरी? यूएक्स सर्विस। सॉरी? यूआई यूएक्स सर्विसेज। UI UX services, तो graduates I think is your what you're looking at। नहीं नहीं, मेरे को बिजनेस ओनर्स टारगेट करना है यूएस के अंदर। हाँ, तो entrepreneurs डाल दो उसमें। अच्छा, इंटरेस्ट के अंदर। हाँ, ओके। मतलब नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता है, फिर वो बिहेवियर आता है कि जो लोग entrepreneurs होते हैं बाय जॉब टाइटल, फिर वो लोग को चला जाएगा ना। इसका बिहेवियर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, कि मतलब किस तरीके के लोग मेरे बिजनेस को सर्च कर रहे हैं? बिहेवियर मतलब इन मार्केट सेगमेंट, जो लोग मार्केट में वो चीज को ढूंढ रहे हैं एट द मोमेंट, वो लोग बिहेवियर में आते हैं। ओके, इन मार्केट सेगमेंट। और इंटरेस्ट के अंदर क्या आएगा मैम, इसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो? उनका इंटरेस्ट, व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, व्हाट दे आर फॉलोइंग इज फॉर व्हाट। एग्जांपल स्मॉल बिजनेसेस और बिल्डिंग देयर प्रोडक्ट, या फिर एमवीपी, या फिर यूजर हाँ, so टेस्टिंग। let's say for example, a person who owns a digital marketing agency, okay? That person will have interest in digital marketing for sure, right? Plus, the person himself, herself is an entrepreneur as well ओके। by profession. वैसा। इस पे काम करना पड़ेगा, बिना कॉन्टेक्स्ट ही क्लियर नहीं हो रहा मुझे। हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, बिकॉज ये एक बार में नहीं क्लियर होगा कभी भी। सी, दिस हम्म, इज नॉट समथिंग दैट, it is strategy, it is something that you cannot by heart. You have to keep on working on different categories, different products, different services, different industries, and then see how it is coming along. जब मैंने शुरू किया था, मैंने भी एक बार में वो नहीं किया था। when I had multiple clients and I हम्म, had to do SCM for all the multiple clients, then I was like अच्छा ठीक है, इसके लिए ये बराबर, इसके लिए ये बराबर, ऐसे करके in the ओके। end आपको पहुंचना आपके टारगेट ऑडियंस तक ही है ना, इजीली। हाँ how जी। easily can you reach? If I want to, let's say, sell, if I'm into real estate, if I want to sell, if I'm a developer, I want to sell my flats, my residential properties to someone. हम्म, Someone who's interested in real estate may not be my perfect target audience, because क्या करूं, उनके इंटरेस्ट से थोड़ी ना वो लोग लेने वाले हैं मेरा जो फ्लैट है, वो नहीं लेंगे वो लोग, ठीक है। पर अगर मैं ऐसे लोग को टारगेट करूं जो लोग मार्केट में ऑलरेडी है, जो ढूंढ रहे हैं 1 BHK 2 BHK, आर दे माई परफेक्ट टारगेट ऑडियंस? तो वहां पे मेरा राइट। बिहेवियर काम कर जाता है कि इन मार्केट में जो लोग हैं जो हुआ लुकिंग फॉर न्यू प्रॉपर्टीज आर माई टारगेट ऑडियंस। अच्छा, मतलब तीनों को राइट डाउन लिस्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, जो फिट बैठे उसको जो यूज करना है। हाँ, जो सही लगे वो करो। ओके। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। अच्छा जी, मुझे लगा कि ये तीन तो सिलेक्ट करने ही है। नहीं नहीं, इनफैक्ट एक मैंने, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल आल्सो। मर्सिडीज बेंज का वन ऑफ माय इंटर्न्स हैपन टू मेक अ वेरी बिग मिस्टेक इन मर्सिडीज बेंज, के जब उसका एड बना रहे थे तो उसने क्या किया, उसने लोकेशन डाल दिया। सो इन ओके। मुंबई देर इज एन एरिया विच इज साउथ बॉम्बे, okay, हम्म, which is kind of town, like which is I would say on a little higher, uh, uh, how do I say it? It's समझ a गया। little on an expensive side, okay, on गॉट a इट। posh side, right? Now that particular part उसने क्या किया कि उस जगह को सिर्फ टारगेट कर दिया लोकेशन वाइज, ओके। right? Now it is not important कि person staying in that particular location will buy a Mercedes Benz and someone else staying somewhere else may not buy the Mercedes Benz. What that person thought is कि नहीं, यहाँ पे सब पैसे वाले रहते हैं तो यहाँ पे हम इनको टारगेट करेंगे, ठीक है। गलत नहीं अब था। वो लोग जो वहां पे रहते हैं वो लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाले हैं सारे। They अच्छा। currently don't have money for that to buy a new product, or probably if they have, they already bought a Mercedes Benz. Now what? ओके। you know तो यहाँ पे उसने क्या गलती कर दिया, what she did was मर्सिडीज बेंज को उसने ऐसे डाल दिया, ठीक है, और कुछ डाला नहीं, इंटरेस्ट वगैरह सब यही डाल दिया। नाउ आई वुड हैव डन इट इज, इन द फर्स्ट प्लेस आई वुड टेकन समवन हु इज इंटरेस्टेड इन लग्जरी कार्स, फर्स्ट पॉइंट। आई ओके। डोंट केयर वेयर द पर्सन इज स्टेइंग। अरे यार,
इंडिया में ना जो आउटस्कर्ट्स होते हैं ना, फार्मर्स होते हैं आउटस्कर्ट्स, हाँ जी। जिनको टैक्स नहीं भरना पड़ता है, वो लोग हाँ कैश जी। लेके आके खरीदते हैं ये सब। ठीक है, तो हाँ। आई इट इज वेरी स्टूपिड ऑफ एनीवन टू एक्चुअली थिंक कि अरे ये वाले लोकेशन पे ऐसा खरीदेगा या इनकम कैसे खरीदेगा। एनीवन कैन बाय। द पॉइंट इज ओके। द पर्सन शुड बी इंटरेस्टेड टू बाय, or probably the person should be out there in the market to buy a new car, probably a luxury car. Then, ओके, पहले इंटरेस्ट पे जाएं, किस बंदे का इंटरेस्ट है। hmm. सेकंड, कि अब उसका इन मार्केट सेगमेंट कौन सा, अगर मिल सकता है तो ऐड कर देते हैं, नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं। Yeah, और फिर डेमोग्राफिक देख सकते हैं कि किस डेमोग्राफिक में बैठ सकता है। लेकिन exactly, ये भी डिपेंड करता है कि गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दिमाग में तो नहीं आएगा। exactly. गॉट इट। थैंक यू जी। No problem. You all can finish your extensions, everyone, please, and then publish the campaign. Once published, I'll tell you what to do. Ma'am, after this site link, there is callouts. So these Hmm. are used to just highlight some more benefits of the business or what? No, callouts are one of the other extensions that you can use to not highlight benefits. It is more about having extra additional services that you can mention. Sure. Okay. So No, like for digital marketing service, what additional we can say? Free audit. Free Um, audit. yeah, a free strategy, free Oh, consultancy. one mentoring and all. मेंटोरिंग नहीं चाहिए रहता उन लोग को, किसी को भी सर्विसेज, मतलब एजेंट सर्विसेज के लिए मेंटोरिंग नहीं चाहिए रहता है। नहीं, सर्विसेज बोल दिया, मतलब जो सिखाते हैं एज, तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह में। एजेंसी अलग है, हाँ इंस्टीट्यूट वही, अलग है। एजेंसी बोल दिया मैंने। दोनों, हाँ, एजेंसी के लिए अलग होता है, इसके लिए अलग होता है। ma'am, in lead form, can I add background image? Of course. In lead form, या para. या या यू कैन ऐड। Just finish with the extensions and we'll go ahead. Do we have to set a budget also for that? Yeah, I mean, if there's a recommended budget, just take that only. For now, you can take that. Once done that, I'm going to show you guys one more thing. मैम, साइट लिंक के अंदर ऑलरेडी कुछ प्री क्रिएटेड आ रहे हैं, ब्लॉग्स, इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, तो इनको स्किप करके सिर्फ हाँ, अ, बनाए थे पहले। नहीं, शायद कभी बनाए होंगे, याद नहीं। हाँ, तो वही वाले आ रहे हैं फिर, जो पहले बनाए थे वो। ओके।
Ma'am, what's the use of structured snippets? Structured snippet is basically using credentials. You could use credentials of your courses or any product or services which are very popular, or any other products and services that you have been using in your particular service or product, like like a developer using Jaguar tabs, like that. Okay. Ma'am, does this ad strength matter while creating campaigns? Yes, yes, yes. It has to be an excellent. Once put in, can we publish the campaign or do we need to wait? Sorry? Once we are complete, like we have created the You can extension. publish the campaign. Please publish the campaign and show it to me, because I have to ask you guys to pause the campaign as well. At any given point of time, if you all put money, it starts being active. We don't want that. Ma'am, I published the campaign, but it's now coming. Your ads will apply after being reviewed, and then it's coming installed with WordPress and all. Yeah, this cancel that, all of those things on the upper left, cancel that. Okay, just I don't have to do anything. Right? Just cancel it. Yeah. Right? Share your screen. I'll show it to others also. Share your screen. Just a minute. Use Google tag found on your website. Can you see? Yeah, now cancel this. Yeah, now scroll down. Yeah. Do you see the green color button, the green color circle over there? Yeah. Can you, yeah, drop down and pause it. Perfect. Okay, so please guys remember one thing, that you all have to pause your campaigns always. Whenever once it's published, pause it. Should I stop Yes, sharing? yes, please. Yes, please. Thank you.
Between also, there was a link which said add your business name and logo. You can't do that because for that you'll have to have your KYC documents submitted to Google and show yourself as a company. Oh, okay. So, okay. Yeah. That's why we skipped it. So once they clear you, then you can add that. Yeah. Google needs to see if you are like an authentic company or just mocking. Do they take long time to authenticate? Well, no, hardly. Even the reviews happen too fast. So I did that. It's been third day, I think. I sent the documents. Okay. And No reply yet. okay. You can call in customer care. Their customer care is very nice. Call directly on the toll-free number that they have. Okay. Give them the account number. Tell them that you have given the review and all of those things. Okay. I'll be right back in a minute. Yeah. Please let me know once it is done, everyone. I'm done. Everyone's done? Ma'am, what to do after I get this? Your ads will go live after being reviewed. The next, कैंसिल का भी दिखाया ना मैंने कैंसिल करके उसको फिर पॉज कर दो कैंपेन्स में जाके यहाँ तो install with WordPress और install कैंसिल manually. कर दो अपर लेफ्ट से कैंसिल कर दो उसको मैम यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। ये बोल रहा है योर कैंपेन कांट रन एड्स विद मिसिंग इन्फॉर्मेशन। दिखाइए मुझे शेयर कर दीजिए स्क्रीन प्लीज शेयर शेयर। ओके। हाँ ठीक है पब्लिश कर दो सीधा चलेगा बेसिकली पैसे मांग रहा था वो ओके ओके। और मैम दो प्रॉब्लम्स फेस करी मैंने अभी। एक तो प्रीव्यू नहीं दिख रहा था राइट हैंड साइड पर, हाँ हाँ और सेकंड टेक्स्ट मैसेज वाला सेक्शन नहीं दिखा, टेक्स्ट मैसेज वाला। वो आपको नीचे मोर असेट्स में आएगा ओके। और यहाँ अब से तो कैंसिल कर दो उसको हाँ वो ओके। निकाल ही दो और यहाँ से नीचे कैंपेन से ग्रीन वाला बटन से ड्रॉप डाउन करके उसको पॉज कर दो परफेक्ट ठीक है। और मैम कल आपने बोला था कि इसको ना पब्लिश करने से पहले ना नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले सेव कर देना। मैंने आज हाँ सेव नहीं करा था, कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट ही आया था। तो वो सेव कहाँ करना होता है? वो जो सेव का पता है कल हम लोग कर रहे थे और बजट दे दिया था बजट के बाद हमें एक सेव का एक ऑप्शन आया था नीचे सेव करके एक छोटा सा बटन आया था जहाँ पे सेव एंड कैंसिल था तो सेव करना था ओके। हम्म और वो एंड में दिखेगा ऊपर ही दिख जाता है? वो अपने को नीचे दिख जाएगा नीचे बॉटम पे सेव करके Almost in the end. हाँ
ठीक है। When you make one more SEM ad, na, you will see in the bottom. हाँ जी, और फिर वो यहाँ पर कहाँ शो होगा? यहाँ पर वो क्या, what you want the save button and all of those things. नहीं Oh, नहीं, yeah. जब वो सेव हो जाएगा फिर वो कहीं पर शो होता है ना, ड्राफ्ट्स में। हाँ, वो ऑल कैंपस में नहीं, अभी नहीं आएगा ना ड्राफ्ट में। अभी तो पब्लिश कर अभी दिया सेम आपने। अभी पब्लिश हो गया, इन केस अगर नहीं करा होता तो तो यहाँ ड्राफ्ट में आ जाता। जाता, ऑल कैंपस में ड्राफ्ट में आ जाता यहाँ पे। ओके, गॉट इट। ठीक, कर दो शेयर, हो गया। Okay, now here I want you guys to write down GADV tools. Okay, Google Analytics demos and tools. GADV tools. Okay, click and then go to campaign URL builder. ठीक है, अब remember one thing, we are doing this to track our campaigns. हम जो भी कैंपेन रन कर रहे हैं, वो कैंपेन के थ्रू कितने लोग हमारे कैंपेन से वेबसाइट तक आ रहे हैं और क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो हमें समझ में आएगा। ठीक है, वैसे भी ट्रैकिंग करने के लिए हमारे पास पिक्सल्स है, गूगल टैग कोड है, बहुत कुछ है। ये हमारा बैकअप है, दिस इज द बैकअप, कि अगर वो नहीं चल रहा है, वहां पे कोई एरर आ रहा है, तो यहाँ पे तो हो ही रहा है ट्रैकिंग। ठीक है, तो जहां पे भी हम कोई परफॉर्मेंस ऐड कर रहे हैं, जहां पे भी हम एसईओ को छोड़ के कोई भी ऐड कर रहे हैं, तो वहां पे हमें ये करना ही है। आपके पास जितनी भी यूआरएल्स है, फाइनल यूआरएल जो आप साइट लिंक के लिए यूज कर रहे हो या कोई और चीज के लिए यूज कर रहे हो, जितने भी वेब पेज है, जितने भी यूआरएल है, हर एक यूआरएल का इंडिविजुअली एक यूटीएम लिंक बनेगा। अब यूटीएम लिंक कैसे बनाते हैं, मैं वो आपको दिखा रही हूँ। आपको जीएडीवी टूल्स पे जाना है, कैंपेन यूआरएल बिल्डर पे जाना है, come on this particular page, you have this website URL. Let's say I've taken Myntra over here, or let's say I'm going to take Digital Vidya. I'm just going to change this to Digital Vidya right here. All right, इसमें in this particular website URL, my campaign source is always the platform, which platform you're using for that particular this thing. So I'm using Google Ad, or probably just Google. Okay, and then the campaign medium is the objective. So here I'm using search and clicks. All right, and my campaign name over here would be, जो हमने डाला था वहां पे वही सेम कैंपेन नेम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे सर्च इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा CDMM कोर्स, और यहाँ पे आ जाएगा डिजिटल विद्या का नाम। ठीक है, तो ये जो हमारा बन गया, ये जो हमारा यूआरएल है, ये हमारा फाइनल यूआरएल है। अब जहां पे आपने फाइनल यूआरएल यूज किया है, मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, बात की बात कर रही हूँ। जहां पे भी आप फाइनल यूआरएल यूज कर रहे हो, वहां पे आपने यही कैंपेन यूआरएल यूज करना है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो मिंत्रा का सबसे बड़ा एग्जांपल है मेरे पास, which I would want to show you guys. I'm gonna write down Myntra over here. ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड रिजल्ट आया मिंत्रा का, और ये जो है मेरा नॉर्मल रिजल्ट है। ठीक है, ये मेरा एसईओ का रिजल्ट है। अब एसईओ में बाय द वे दीज आर ऑल द साइट लिंक्स, और ये जो साइट लिंक्स है ये हमारे गूगल एड्स के साइट लिंक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया, इफ यू सी दिस, ये आपको नॉर्मल दिख रहा है Myntra.com, कुछ नहीं है यहाँ पे, यूटीएम लिंक है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि एसईओ में यूटीएम लिंक हम नहीं डालते हैं। अब मैं आपको फर्स्ट वाला करके दिखाऊंगी, स्पॉन्सर्ड रिजल्ट वाला। यू सी दिस, सी यूटीएम मीडियम, करेक्ट कर रहे ये लोग। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रैकिंग होता है। विद दैट वन क्लिक, with that one click of the person on that UTM link, that person's entire history, geography, everything comes and gets tracked in that particular link. And that link's report will be available for you in your Google Analytics account. Okay, Aman?
मैम यूटीएम लिंक क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है? इसको ट्रैकिंग लिंक बोलते हैं, जिससे आपके आपके कैंपेन का ट्रैकिंग होता है। आपके आपने कैंपेन रन कर रहे हो, कितने लोग कैंपेन के थ्रू आए, कितने कितने परचेजेस हुए, कितने लोग कहाँ से आए हैं, क्या जेंडर है, क्या एज है, व्हाट फोन्स आर दे यूजिंग, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू गेट, ओके, एक्टिविटीज एंड इवेंट्स एंड एवरीथिंग। जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन के लिए हम यूटीएम ट्रैकिंग करते हैं। वो ट्रैकिंग लिंक से ही पूरा इन्फॉर्मेशन आता है आपका। और अगर वो हम ट्रैकिंग नहीं करते तो पूरा गैम्बलिंग हो जाता है ना, फिर अगर हम पैसे डाल रहे हैं हमें पता नहीं क्या आ रहा है रिपोर्ट में, तो रिपोर्टिंग चाहिए रहती है ना हमें, तो ट्रैकिंग हो रही है। ऑलराइट, और ये जो जीएडीएवी टूल है ये हमारे पोर्टल के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड रहता है या हमें कनेक्ट करना पड़ता है? नहीं, डिस्कनेक्टेड ऑलरेडी। ये कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। दिस हमने जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल दिया ना, दिस इज इनफ। ओके। ये सिर्फ और इंफॉर्मेशन डालने से हो जाता Called है। a GA4 tool, right? या यूल गेट द इंफॉर्मेशन GA4। आपने ये जनरेटेड कैंपेन यूआरएल कहाँ से लिया था? ये यहीं पर जनरेट हुआ था? हाँ, ये मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दिया, यहाँ पे जनरेट हो गया अपने आप। ये उस पोर्टल से यहाँ पर कैसे लिंक हो रहा है ऑटोमेटिकली? लिंक नहीं हो रहा है मेरा, यहाँ पे जितने लोग जाएंगे ना, ये वेबसाइट पे इंडियन लोग जा रहे हैं, करेक्ट, ये मेरा फाइनल यूआरएल है। ओके। मैंने यहाँ पे दूसरी इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो अब क्या हो रहा है कि ये ही पर्टिकुलर वेबसाइट पे जितने लोग जा रहे हैं, वो सबका, जितने भी लोग कैंपेन के थ्रू जा रहे हैं, वो सबका इंफॉर्मेशन अपने आप मेरे लिंक में, ये पर्टिकुलर लिंक जो है ना, यहीं पे लिंक में ट्रैक हो रहा है सब कुछ। और ये लिंक का इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगा मेरे गूगल एनालिटिक्स 4 पे, जो कि मेरे वेबसाइट से कनेक्टेड होता है। एंड सिंस माई वेबसाइट इज मेंशन्ड ओवर हियर, इट इज ऑलरेडी गेटिंग लिंक्ड। अच्छा, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल एनालिटिक्स पे जाएंगे वहाँ पर और हम ट्रैकिंग डिटेल्स दे आ सकते हैं। जाएगा। तो पहले जैसे होता था, गूगल एनालिटिक्स से एक स्निपेट उठाकर हम वेबसाइट के एचटीएमएल में पेस्ट कर देते और गूगल वो अलग एनालिटिक्स। है, वो ट्रैकिंग अलग है, ये ट्रैकिंग अलग है। ये हम लोग तब करते हैं जब हमें दूसरे ट्रैकिंग तो हम करते ही है, ये हम लोग एज अ बैकअप ट्रैकिंग करते हैं कि अगर वो एरर आ गया कहीं पे तो ये वाला तो है हमारे पास ऐसे। गॉट इट। थैंक यू I मैम। think this is also much more detailed, isn't it? इन व्हाट सेंस? Is literally like user, how the user is moving on the website, going from one page to another, spending what time, and when did the डिपेंड्स user ऑन हाउ exit? वी जनरेट दैट इंफॉर्मेशन, हाउ वी यूज दैट इंफॉर्मेशन, डिपेंड्स ऑन दैट। Yeah. राशि। So, ma'am, this UTM tracking, so in my company, like when we drive registrations, we have another agency also who helps us for the registration and all. हम्म। So, while sometimes like it gets confused with the data that who are driving the registration. Are we like we are like we also do the ads, we also run the हम्म। ads. We हम्म। are running ads. Registration are coming from our ads or their ads. So we can use this UTM tracking to figure out या like या from दिस यूटीएम same. ट्रैकिंग विल टेल यू कि कौन से कैंपस से कितने लोग आ रहे हैं। यस। Okay, so we can give this UTM tracking to them so we can figure it out from where In we are. fact, the UTM links are also given to influencers to understand which influencer is giving what information. Okay, okay, we can do that. Okay. Yeah. Aman? मैम, दिस इज अ रिकमेंडेड स्टेप, ऑप्शनल स्टेप, मतलब किस टाइप का वो है ये? This is optional, but I recommend it. ओके। क्योंकि मेरे साथ ऑनेस्टली सी आई एम वर्किंग सिंस 11 years and I'll tell you my experience. बहुत से बार ऐसा होता है कि अपना जो नॉर्मल हम पिक्सल कोड डालते हैं या टैग कोड डालते हैं ना, तो बहुत ज्यादा एरर्स आ जाते हैं कभी कभी वेबसाइट पे, तो ट्रैकिंग बंद हो जाता है अपने आप। ये ठीक कौन है। से कोड आपने बताए हैं? हाँ, ये जो अभी आपने कोड्स बताए हैं, पिक्सल कोड और कैट कोड, ये कौन से क्या कोड्स होते हैं? ये मैंने बताया नहीं अभी तक, वो तो मैंने ओके। बताया ही नहीं अब तक। ये तो बैकअप है अपना। वो जो असली जो ट्रैकिंग करेंगे वो तो करेंगे, तो करना ही है। वो जो मेन ट्रैकिंग है ना, अगर वो नहीं हुआ ना, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इंफॉर्मेशन दे देगा अपने को। एटलीस्ट हम ब्लाइंड गेम नहीं खेल रहे यहाँ पे, गैम्बल नहीं कर रहे कम से कम, इसलिए ओके, सेफर ऑप्शन है। सेफर ऑप्शन है। मैं तो हर बार रेकमेंड कर ही दो यार, इसमें कुछ अपना जा नहीं रहा है, देखो कुछ जा तो नहीं रहा है अपना, उल्टा और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो क्या क्या प्रॉब्लम है, कर दो। कि हमने मैम लगा बट रखा है बट हमें दिखेगा कहाँ इसका डेटा, लाइक GA4। ये मैम लेकिन ये जो आपने जो यूटीएम हमने जो जनरेट किया ये यूआरएल, ये हम लोग को फिल कहाँ करना है, मतलब कैंपेन में कहाँ जाके सबमिट करना है इसको? फाइनल यूआरएल।
फाइनल यूआरएल आप एक दिखा सकते हैं मैम, मतलब कहाँ पर एक्चुअली स्क्रीन हमने में? कर दी ना पूरी एड पब्लिश, अभी कैसे? अच्छा ओके ओके, यार दिखा रहा है। फाइनल फाइनल यूआरएल। फाइनल यूआरएल जो था, जो डिस्प्ले पाथ के ऊपर था वो। तो इस यूआरएल को लेकर वहां फाइनल यूआरएल में पेस्ट करना था। हाँ, ओके। टाइट लिंक्स के लिए भी यूटीएम लिंक्स करने हैं, अब क्योंकि नहीं हम वहां कर पे सकते। भी दूसरे अलग अलग लिंक्स आएंगे। अब ओके। हम कॉपी पेस्ट करके नहीं कर सकते क्योंकि हमने पब्लिश कर दिया। अभी मत करो, मुझे करना भी नहीं था अभी, मैं तो जस्ट आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू कि ये करना है। कभी भी आगे जाके, अभी मत करो, आगे जाके कभी भी आप करोगे ना, कोई एड रन करोगे तो उसमें करना है। अभी वैसे भी जरूरत नहीं है कुछ करने की, अभी क्यों करोगे? So, ma'am will get the result in another site. I think I heard that about this, how much tracking we got on this UTM link. सॉरी? So, after we put this UTM link on a final URL, so हम्म। like in the Google Ads only will get the result of that campaign of that UTM tracking. GA4 Yes. GA4। ये फोर में जाके बनाना पड़ेगा अकाउंट पहले? सॉरी? Is the GA4 account need to be created? Analytics account? That will do as a model, separate model altogether, but yes, that has to be done before any sort of ads. मैम जीएफओ गूगल पे लिखने पे तो कुछ और ही आ रहा है, जीएफओ क्या चीज़ है? गूगल एनालिटिक्स 4। ओके। मैम आप इसके बाद असाइनमेंट बता सकते हो सो दैट एटलीस्ट आई कैन डू इट लास्ट। असाइनमेंट मैं सोच रही थी फ्राइडे को बताऊं, ओके। या फ्राइडे इसलिए क्योंकि सैटरडे संडे यू ऑल कैन, और तब तक मैं खत्म भी कर दूं तो एटलीस्ट सैटरडे संडे को यू ऑल कैन फिनिश द असाइनमेंट्स एट वंस। ओके, ऑल गुड? The extensions, the publishing part, and the GADEV tools. Are we clear? Tomorrow, I'm going to do the display ad for you guys. That's another ad altogether. But I want you also guys to use the same keywords that you all have used earlier for now in the HCM. And on Friday, I'm going to do the tracking part. The tracking code that I told you guys about right now, the main tracking code, that I'm going to do tomorrow. So please make sure that you all are attending and interacting. Okay? All right. And I think you all received your video on time, no? Yesterday. Yes. कल वाला तो टाइम पे आ गया था अच्छा खासा। ठीक है, तो सेम आज का भी आ जाएगा, डोंट वरी, प्लीज रिवाइज इट वंस। And please make sure that you all are you all are watching the SCM video and you all are practicing it. It's very important. Akhil? मैम मेरा ना कैंपेन पब्लिश नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम कुछ ना कुछ तो शो हो अंदर रहा कुछ हुआ होगा गलत, देखो खोल के जरा। है। शेयर करूं स्क्रीन? हाँ करो। ऊपर करो। नहीं नहीं, ऊपर, इधर बीच में से ऊपर करो, यहाँ से। ये पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट करो। इसमें नेक्स्ट। ग्रुप मैन्युअली तो नहीं बनाना ना? नहीं, नेक्स्ट करो। दिस वन। रेकमेंड पे जाओ। हम्म। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट। एक सेकंड।
आ तो अब गया। हो गया। कैंसिल करो इधर, स्क्रॉल करो, यहाँ से ग्रीन पे चेक। क्लिक करो और पॉज करो। थैंक यू। डन। ऑलराइट। ठीक है, ऑल गुड। यस मैम। ठीक है, done. So I'll upload the video in next half an hour, but again, you all will receive the video tomorrow morning itself, IST. Okay? All right. Great. Thank you, everyone. Good night. Good night. Good night. Thanks, ma'am. Good night. Good night.